welcome back to my channel. Tomorrow is my exam MEV19 Research Methodology for Environmental Science. तो यहाँ पर I don't know if it is visible to you or not, but I am reading these questions for all of you and as well as for me. So first question is what is research methodology? रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथडोलॉजी simply refers to the practical how of any given piece of research. More specifically, it's about how a researcher systematically designs a study. किसमें कोई भी रिसर्चर है वो कैसे एक स्टडी को डिज़ाइन करता है सिस्टमैटिक वे में टू इंश्योर वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट्स, ताकि जो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट्स दैट एड्रेस द रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एम्स इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स जो कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव कर लेते हैं. बट फॉर कंप्लीटिंग और अचीविंग एन एम इट नीड्स अ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एफर्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ डिड द रिसर्चर गो अबाउट डिसाइडिंग, मतलब कि वो कोई भी रिसर्चर रिसर्च के लिए क्या डिसाइड करता है. व्हाट डेटा टू कलेक्ट, कौन सा डेटा उसको कलेक्ट करना है. एंड व्हाट डेटा टू इग्नोर, और कौन से डेटा को इग्नोर करना है. हु टू कलेक्ट इट फ्रॉम, और कहाँ से कलेक्ट करना है. इन रिसर्च दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग डिज़ाइन, मतलब एक तरीके का आपको सैम्पल डिज़ाइन करना है. देन है हाउ टू कलेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड डेटा कलेक्शन मेथड्स, मतलब किस तरीके से कलेक्ट करना है तो इसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स. देन उसको एनालाइज करना, किसी भी डेटा को एनालाइज करना, हाउ टू एनालाइज, दिस इज़ कॉल्ड डेटा एनालिसिस मेथड. मैं बीएड के भी वो डालूँगी वीडियोस, तो आप उसमें कंटेंट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग पीएचडी, फॉर डूइंग रिसर्च वर्क. एंड यहाँ पर है इन आर डिसर्टेशन. अब डिसर्टेशन का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. थीसिस, एकेडमिक जर्नल आर्टिकल और प्रिटी मच एनी फॉर्मल पीस ऑफ रिसर्च. You will find a research methodology chapter or section which covers the aspects mentioned above. मतलब कि हम एक ऐसा research methodology, मतलब कोई ऐसा chapter हम find करेंगे जो कि ऊपर के जो aspects हैं वो cover करेगा. Importantly, a good methodology chapter in a dissertation or thesis, जो आप thesis लिखते हो ना, जो आपको उसके बाद ही you will get the PG की degree, explains not just what methodological choices were made but also explains why they were made. In other words, the methodology chapter should justify the design choices by showing that the chosen methods and techniques are the best fit for the research aims and objectives, and you will find valid and reliable results. A good research, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. A good research methodology provide scientifically sound findings, मतलब साइंटिफिकली वो उसकी जो साउंड होगी वो साइंटिफिकली प्रूवन होगी या इम्पॉर्टेंट होगी या साइंटिफिक वे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होगी. वेयर एज अ पुअर मेथडोलॉजी डजंट. ये तो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन की रिसर्च मेथडोलॉजी होती क्या है. एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ अ रिसर्च मेथडोलॉजी इम्पॉर्टेंट. वाई इज़ अ रिसर्च मेथडोलॉजी इम्पॉर्टेंट. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा. रिसर्च मेथडोलॉजी गिव्स रिसर्च लेजिटिमेसी. क्या है लेजिटिमेसी? मीन्स होता है, आप जानते होंगे लेजिटिमेट जो कि होता है जायज़ तरीके से. एंड प्रोवाइड्स साइंटिफिकली साउंड फाइंडिंग्स, और जो साइंटिफिक वे में इम्पॉर्टेंट होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्लान. यहाँ पर एक हमें डिटेल्ड प्लान प्रोवाइड करते हैं दैट हेल्प्स टू कीप रिसर्चर ऑन ट्रैक. जो रिसर्चर्स हैं उसको ट्रैक पर रखने के लिए. मेकिंग द प्रोसेस स्मूथ, और जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो, इफेक्टिव हो, मैनेजेबल हो. अ रिसर्चर मैथडोलॉजी allows the reader to understand the approach and methods used to reach conclusions
Having a sound research having a sound research methodology in place provides the following benefits. क्या benefits होता है? Other researchers who want to replicate the research have enough other researchers who want to replicate the research have enough information. उसके पास proper information होनी चाहिए, sufficient amount में होनी चाहिए. Researchers who receive criticism can refer to the methodology and explain their approach. जिन researchers को कोई criticism मिलता है तो वो अपनी methodology को explain कर सकते हैं और अपने approaches को भी explain कर सकते हैं. It can help provide researchers with a specific plan to follow throughout their research. और इसमें नेक्स्ट है द मेथोडोलॉजी डिज़ाइन प्रोसेस हेल्प रिसर्चर्स select the correct methods for the objectives. The methodology design process helps researchers select the correct methods for the objectives. It allows researchers to document what they intend to achieve with the research from the outset. तो ये आपको मैंने अभी 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो कि है व्हाट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी. सब ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर. व्हाट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड व्हाई इज़ अ रिसर्च मेथोडोलॉजी इम्पॉर्टेंट. ये जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल साइंस में ये व्हाई इज़ अ रिसर्च मेथोडोलॉजी इम्पॉर्टेंट, ये उसमें भी है. तो आप लोग प्लीज़ इसको समझ लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मेक योर ओन नोट्स एंड मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब इसमें क्वेश्चन 2 है. ये है क्वेश्चन 2. इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लेन टूल एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च. तो क्या करते हैं, इसको ज़रा पूरा ही मैं ऊपर कर देती हूँ. हाँ, एक्सप्लेन टूल एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च. तो यहाँ पर यू कैन सी क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल्स क्या होते हैं. लेट मी शो यू क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल्स क्या होते हैं. क्वांटिटेटिव मेथड्स इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा. जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा ऑफन इन न्यूमेरिकल फॉर्म. जो जनरली क्या होते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म्स होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं. द रिसर्च डिज़ाइन इज़ डिटरमाइंड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन. जो द रिसर्च डिज़ाइन होती है इज़ डिटरमाइंड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इज़ नॉट फ्लैक्सीबल. वो फ्लैक्सीबल नहीं होती है. फ्लैक्सीबल का मतलब होता है लचीला एक तरीके से. द रिसर्च प्रोसेस, इंटरवेंशंस एंड डेटा कलेक्शन टूल्स एग्जाम्पल क्वेश्चनियर्स और स्टैंडर्डाइज्ड. वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए टू मिनिमाइज और कंट्रोल पॉसिबल बायस. बायस मीन्स होता है भेदभाव. प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ क्वान्टिटेटिव डेटा कलेक्शन स्ट्रैटेजीज. जिसमें हमें क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो डेटा कलेक्शन स्ट्रैटेजीज हों. नाउ क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल्स होते हैं एंड क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता बेसिकली, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. ओके, तो उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स एंड टूल्स. अब ये बहुत ही बड़ा है, मैं पर आपके लिए जल्दी रीड आउट कर देती हूँ. इसमें है क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक. क्वालिटेटिव रिसर्च नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च इज जनरली used to explore values, attitudes, opinions, feelings and behaviors of individuals and understand how these affect the individuals in question. Researchers using qualitative methods are concerned with individuals' perceptions of specific topics, issues or situations and the meanings they assign to their lives. This kind of research is important for generating theory, developing policy, improving educational practice, justifying change for a particular practice and illuminating social issues. It may also be used to explain the results of a previous quantitative study to prepare for the development of a quantitative study.
If your research team decides to use qualitative methods in your study, if your research team decides to use qualitative methods in your study, you will need to describe how qualitative methods will provide the information, to help you address your research objectives and research questions. For example, qualitative research may be appropriate because you intend to explore the values and behaviors of individuals in the study area in relation to a public health intervention, and to understand how these affect the phenomenon in question. आप लोग मुझे बताएंगे फिनोमिना और प्रोसेस में क्या अंतर होता है इन द कमेंट सेक्शन. फॉर एग्जांपल, व्हाई डू सम हाउस होल्ड्स हैव बेड नेट्स बट डू नॉट यूज़ देम. कई लोगों के पास बेड नेट्स होते हैं बट वो लोग यूज़ नहीं करते. और व्हाई डू इंडिविजुअल्स इन अ स्टडी एरिया डिक्लाइन सर्विसेज फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड antenatal clinic. Now tell me in the comment section, what is antenatal clinic? Qualitative methods can provide context, a deep understanding of stakeholders' needs and participants' perspectives. When collecting qualitative data, it is preferable to use more than one data collection method. Obtaining information on the same phenomena in a variety of ways allows the researcher to triangulate the data, adding rigor to the research. By nature, qualitative data collection is emergent, and the design is intentionally flexible to enable the researcher investigate themes, findings in more detail as they emerge. Qualitative methods use data collection methodologies such as interviewing, observation, discussions, and review of documents. Example, diaries, historical documents. The results of qualitative research. अब इसमें जो रिजल्ट्स हैं, द रिजल्ट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव, ये बेसिकली क्या होते हैं? आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं. ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, the results of qualitative research are descriptive और explanatory होते हैं rather than predictive. इसमें हम prediction नहीं कर सकते हैं, rather than predictive, and are typically time consuming to collect and analyze. The following table may be helpful to you as you decide which qualitative tools and techniques are most appropriate for your IR project. Unlike quantitative data collection, qualitative data collection can be more flexible. जो आपका quantitative data collection होता है उसमें ज़्यादा better होगा. Qualitative data collection can be more flexible, allowing the research, मतलब उसमें आप अच्छे से research कर सकते हैं to incorporate emerging themes in an ongoing data collection. This allows the researcher to test and validate findings as they collect the data. For example, perhaps in one in-depth interview, the researcher learns that people do not attend the lymphatic filariasis mass drug administration. Lymphatic filariasis, important है. Do not attend the lymphatic filariasis mass drug administration because they use traditional medicines. वो क्या करते हैं? वो traditional जो medicines होती हैं, and therefore feel that they are already अंडर ट्रीटमेंट, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट में हैं. द रिसर्चर में देन ऐड अ रिलेटेड क्वेश्चन. वहाँ पर वो एक क्वेश्चन ऐड कर सकता है टू सब्सिक्वेंट इन डेप्थ इंटरव्यूज टू सी हाउ प्रिवेलेंट दिस फिनोमिनन इज इन द स्टडी पॉपुलेशन. जो आपका नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग कर लेते हैं. बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आपको नेक्स्ट उसमें कराती हूँ मैं वीडियो में. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. प्री टेस्टिंग होता है, देखो, ऑल स्टडी इंस्ट्रक्शंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव शुड बी प्री टेस्टेड. उनको क्या करना चाहिए? पहले से ही टेस्ट कर लेना चाहिए. should be pre-tested to check the validity and reliability of data collection tools. Pre-testing allows the research team to check whether the research instructions and questions are clear, context specific, and that adequate time has been allowed to administer the questionnaire, etc. Pre-testing should be conducted
from a comparable study, population and environment, since data management is critical to the success of the research. अब वहाँ पर क्या होता है कि डेटा मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होता है टू द सक्सेस ऑफ द रिसर्च. द डेटा मैनेजमेंट जो टीम है शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग द डिस्कशन के टाइम पे वो अवेलेबल होनी चाहिए. दैट फॉलोज द प्री टेस्ट in order to incorporate changes into the final design of the tool and facilitate the incorporation of appropriate checks into the data entry system. This stage includes designing the forms for recording measurements, developing programs for data entry, management and analysis, and planning tabulations to ensure the appropriate variables are collected. तो मैं आपको अभी कितने क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने आपको इस MEV 19 रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल